Hello friends, welcome once again. In the AFOSOP YouTube video series, especially in the group testing series में, आपने एक video देखा होगा basics of group testing, which reads like this. The group testing officer attempts to evaluate individuals in the context of a group. Individuals in the context of a group, and thus to determine a candidate's ability to function in a group. Ability to function in a group. And based on his functional capacity to ascertain his actual and potential level and to assess his suitability for the armed forces. So दो लेवल की बात करता है, प्रेजेंट लेवल परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल लेवल परफॉर्मेंस, बीच में गैप विच आई कॉल इट डेल्टा, एंड वो डेल्टा भर सकते हैं या नहीं ये डिसाइड किया जाता है, आपका ट्रेनेबिलिटी फैक्टर कितना अवॉर्ड किया जाता है। और इसको अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा है तो एफओसोपी के ग्राफी प्लेटफॉर्म पे आप जाके इसे दे सकते हो, और कर्नल सी गणेश बाबू 111.ongraphy.com/s/store, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। यू कैन गो एंड वॉच इट। द सेकंड वीडियो जिसको मैंने ग्रीन टिक किया है, बेसिक्स ऑफ एसएसबी इंटरव्यू, इट इज गिवन देयर। नाउ इसी में एक और चीज दिया है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट 4 टास्क इन द GTO सीरीज, एंड द फर्स्ट 4 टास्क आर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क एंड ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस। नाउ Can you watch this video also if not already watched? मैंने ये बताया हुआ है कि बेसिक सीरीज के फर्स्ट 4 टास्क में if you're able to do 4 out of the 4, very good. Even if you're able to do 3 out of the 4, still good. In case if you're not able to do even 3, that is आप सिर्फ 2 में कर पाए, 2 में नहीं किया, या 1 में कर पाए या 1 भी नहीं कर पाए, तो the first 4 tasks are called leaderless group task. and अगर आपने 4 में से 3 नहीं कर पाए और उससे नीचे किया, 4 में से 2, 4 में से 1 या 1 भी नहीं किया, then the GTO will not clear you in this SSB. आप साइक और इंटरव्यू में क्लियर हो सकते हो, लेकिन GTO नहीं करेगा in case if you don't meet this criteria, significance of the first 4 tasks in the GTO series. इसके बाद आप confirmatory में कितना भी कर लो, you stand no chance of being cleared by the GTO. So आपको इस present level performance और expected level of performance के बीच के इस गैप को यानी डेल्टा को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, टास्क बाय टास्क, और उसे एलिमिनेट करना पड़ेगा एज पार्ट ऑफ योर एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन, एंड सही तरीके से करना पड़ेगा सो दैट यू आर एबल टू परफॉर्म इन द एसएसबी ओवर दोस 5 days, एंड ऑन द 5th day कॉन्फ्रेंस में आप वो हासिल कर पाओगे जो आप हासिल करना चाहते हो। दैट्स recommendation from the SSB. Unless you perform, you will not get what you want, and you can only perform when you prepare well and prepare right. So with this as the backdrop, today in this video I'll tell you 30 major reasons for poor performance by the candidates in the first GTO task, that is group discussion. So group discussion में ही अगर आपने शुरुआती खराब हो गया तो it will start affecting your entire other series also, because आपको लगेगा first task में ही you have made a mistake. So kindly listen to it carefully, can make notes, and इसको समझने से पहले याद रख लो कि group डिस्कशन हो गया, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज हो गया, लेक्चरेट हो गया, these 3 tasks are called indoor tasks, और इसमें आपका power of expression becomes very very critical. For the purpose of definition, it is the candidate's ability to put across his ideas adequately with ease and clarity. So if you look at carefully, there are 2 parts: your ability to put across your idea, that's your power of expression, that's your communication skill and language skills, and ideas adequately with ease and clarity is the depth in content, the understanding of the content, and the way you deliver it. So you need to build up those things. So this becomes very very critical. So anyone of you who has problem in your communication skill, I will suggest you start working on it right from today, because how can you become an effective leader if you cannot communicate? There is no leadership if you cannot communicate. All leaders are excellent communicators, so please develop it. The good thing is the communication skill is a skill, and it can be developed with right amount of efforts and direction.
So definitely do it. Now, before we get into the 30 major points, let's go to the briefing for the group discussion. Quickly, I'll go through it so that we get some key points from that. And I'll suggest you to go through the other briefings also, which are shared in the basics of SSB interview का जो उसमें Graphy के platform पे I've shared it. Please go and watch it so that this gives you complete clarity in terms of what is expected in each of these 9 tasks in the GTO series. I'll take the briefing for group discussion here. So it reads, gentlemen, the first task that you're going to do this morning is called the group discussion. This is just a friendly and very informal exchange of views amongst ourselves on some topic of common interest, much in the same way as you would do in your hostel, common room, or over a cup of tea or coffee in a restaurant. This is not a debate. There is no chairman and you need not take any sides. You do not even have to come to any conclusion. So the highlighted thing is some topic of common interest. Now, those of you going to SSB interview, gazetted class 1 officers के लिए, you are expected to be aware of what's happening around you in terms of the national news, international news, geopolitics, social issues, Indian social issues, sports related issue, defense related issues, and any miscellaneous issue that may of interest. For example, abhi right now, Hamas or Israel के बीच में जो चल रहा है, so you must know what's happening, what triggered, what is the role of क्या बोलते हैं Middle Eastern countries का involvement क्या, how is US involved, USA का president is there, what is the India stand on it, what is the problem between Israel and Palestine, in fact you must know why Jerusalem is important for Jews, Christianity and Islam. What is this West Bank issue? What is this Gaza Strip? What is the whole story of Israel? Though 2 major important things that you must be aware, should be aware, is the Holocaust. Just making so many Jews were persecuted or gas chambers में डाल दिया था Hitler के time पे. And उसके बाद एक Israel का एक plane kidnap हुआ था, raid on Entebbe करके, where अभी के present जो Prime Minister Netanyahu है, his elder brother was the commander who executed that operation जहाँ पे hijack plane को Egypt से निकाल के लाए थे, and in the unfortunate incident the commander, that is Netanyahu's elder brother, was killed. So there's a whole lot of story behind it, history. So you must know what is it, because abhi itna garam hai. If you go and say ki sorry sir, I don't know, that shows the level of ignorance that you have, which will go against you. Next, let's see the subsequent part. You can say what you like, when you like, and as many times as you like. There are no restrictions except that any one time not more than one person should speak, because if many persons talk simultaneously, no one will know what is being said. So simply put, there are no restrictions. Only thing is you should not make fish market. Now, the first part is you can say what you like, when you like, and as many times as you like. Be careful what are you speaking. You have to speak content. You have to bring depth and clarity in your communication. It cannot be superficial. We'll discuss in the subsequent part of the video. Next, do not worry about your expression. It is your ideas that matter. Therefore, as long as you convey your views in a way that we all can understand, that is good enough. So the GTO says, do not worry about the expression. I'll say you worry today and correct it today so that you don't have to worry when you go for the SSB interview. And next it says, it's your ideas that matter. So clearly, the content has been given more important than the manner of your communication. So please work on both content as well as manner of communication. Bola clearly bola, it is your ideas that matter. So ideas, national issues, international issues, geopolitics, defense related thing, international organization, ideas. Therefore, as long as you can convey your views in a way that you all can understand, that is good enough. So please test your communication skill and check if you are able to convey your views in a manner that all your
group members and the GTO understand the way you want them to understand. You have to test it. नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. The last part of the briefing is about the how it will be conducted. To start with, I shall offer you 2 topics to you and let you choose one for discussion. Once you've chosen the subject, I shall repeat the same so that we all are clear about the topics of discussion. You will then get about 20 minutes to exchange your views about it. Thereafter, I'll give you another subject for discussion, but this time without a choice. For this topic also, you will get about 20 minutes. So in the group discussion, there are 2 discussions. The first discussion, you'll be given 2 topics and you can choose one and you'll get 20 minutes, which will be invariably national/international affairs/ geopolitics are connected hoga. And in the second part, it will be something to do with Indian social issues or maybe defense related issue. So 20 minutes for each. So group discussion 2. So prepare well, both your content of communication and the language using which you have to communicate. The last part is about how the task will be administratively conducted and you will be made to sit in a circle and all those things. This you can read. So this is the briefing. So it explains the expectation from a candidate. Now clearly इस briefing को देखने से आपको पता चलेगा your language skills becomes important because without which you cannot anyway communicate. Next, content of communication is more important than your ability to communicate. Language skills चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा content of communication. Your practice public speaking skills, and in a group environment, conflict resolution skill become an important life skill because group में fish market बनता है. You must know how to manage the क्या बोलते हैं conflicts in the group. Now let's come to the 30 major reasons for poor performance by candidates in the group discussion, जो कि आज का topic है. So you can make notes of it. Somebody can type it and put it in the comment box also. Before that, the 2 weeks AFOSOP composite batch is conducted every month at Nagpur. It is a fully residential batch where the candidates and the assessors stay at the Sahas the camp Nagpur mein. The institute address is shown here, AFOSOP Sahas the camp Nagpur mein. Those who wish to register, you can contact me at 9090099035 and I'll get back to you. So let's start with the video. So the first is poor English communication skill. So in case your communication skill is poor, you don't have confidence on your language skills, it will affect your performance in the group discussion. So please work on it. Do not delay. It takes time, but it is possible. Number 2, limited vocabulary. क्योंकि आप हिंदी मीडियम से या रीजनल मीडियम से आए हो या बहुत लेट आपने इंग्लिश मीडियम में स्विच किया है, सो आपकी वोकैबुलरी डेवलप नहीं होने के कारण अगर आपको कुछ समझ में भी आता, आप बोलने में झिझकते हो बिकॉज बहुत लिमिटेड वोकैबुलरी के साथ जाते हो. दिस कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रीडिंग हैबिट, बुक रीडिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग एंड डेली प्रैक्टिस ऑफ फ्रेश 5-6 वर्ड्स, जिसको कि आप कॉमन वर्ड्स को यूज कर सकते हो अपने डे टू डे कम्युनिकेशन में एंड इंक्रीज योर वोकैबुलरी. दिस विल ट्रेमेंडसली हेल्प यू इन कम्युनिकेटिंग. न्यूज देखने से नहीं चलेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, न्यूज देखना पड़ेगा एंड रिपीट करना पड़ेगा यूजिंग दोस टर्म्स सो दैट इट बिकम्स a part of your vocabulary bank. Next is a poor public speaking skill. Sometimes you are able to speak as an individual, but they are looking at your functional capacity, your ability to function in a group. So to practice public speaking skills. So this can be done by practicing in front of mirror या हवा में बोल के या कैमरा लगा के बोल के या 3-4 दोस्तों के साथ मिलके आपको बोलना ही पड़ेगा. Otherwise this will not develop. Poor public speaking skills affect the way you conduct yourself in the GD. Next is because of all these things आपका आत्मविश्वास पहले से ही लो होता है. एक तो लैंग्वेज नहीं है कंट्रोल और ऊपर से कंटेंट भी नहीं है. आपको करंट अफेयर्स नहीं पता, आपको जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता नहीं है, आपको अभी इजराइल और हमास के बीच में क्या चल रहा है वो पता नहीं है, आपको इसका बैकग्राउंड नहीं पता. सो नेचुरली एक खोखलापन होगा. इट्स लाइक आप युद्ध में तो जा रहे हो लेकिन आपको अपने बंदूक और गोली पे भरोसा नहीं है, गोलियां भी कम है. सो आपका आत्मविश्वास अगर लो होगा, इट विल ट्रेमेंडसली अफेक्ट योर
performance in the group discussion. Low content and superficial level of knowledge, बहुत सतह पे चीजों को करके जाना, गहराई नहीं है, सोच में गहराई नहीं है, shallow thinking में फंसे हो, scarcity mentality में फंसे हो, बहुत कम गोलियां लेके सर्जिकल स्ट्राइक के लिए जा रहे हो और आपको पता है ये गोलियां एकदम खत्म हो जाएंगी। एंड shallow thinking होने के कारण क्या होता है कि थोड़ा सा कंटेंट आपके पास होता है, कोई और बोल देता है, आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है और मन में लगता है यार जो मुझे पता है somebody has already spoken. So please make sure you increase your breadth and depth of knowledge in terms of content development. Hollow communication, khotla communication. I agree with you. With what do you agree? Let us give him a chance. He has not spoken. Let us not make fish market. Come on, gentlemen, let us give him a chance. I agree with you. ये सब क्या है? खोखलापन है. This is not communication. This is creating noise, and you get an illusion कि आप ग्रुप डिस्कशन में पार्ट ले रहे हो. इसमें कंटेंट नहीं है, सिर्फ आवाज क्रिएट कर रहे हो. सो हॉलो कम्युनिकेशन नहीं चलेगा. डिबेट का फॉर्मेट ले लेते हो, उसमें क्लियरली ब्रीफिंग में बोला इट इज नॉट अ डिबेट. यू कैन स्पीक whatever you want, whenever you want, and you don't have to come to any conclusion. So there's no fight required here to come to a conclusion. It's not a debate, so you don't need to act like a chairman for the debate and don't have to fight to prove your point. You simply have to express your point, sir. It's a divergent discussion, not a convergent discussion. GP का discussion is a convergent discussion. कोई बता सकता है क्यों GP का discussion convergent? जरा इसमें बताओ क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ. Why GP का discussion is a convergent discussion whereas GD का it's a divergent discussion? जरूर बताना. Now, so I've already spoken. Don't have to converge this discussion. It is a divergent discussion. GD is a divergent discussion. आपको सिर्फ अपनी बात रखना है, आपको किसी निष्कर्ष पर आने की जरूरत नहीं है. फिश मार्केट बनाते हो, जबकि स्पेसिफिकली बोला है कि there's only one restriction that any one point of time only one person must speak. So if you're the one who creates the fish market, or if you're the one who's most dominating and bulldozing your way, you are breaking this instruction given by the GTO. So don't make fish market and don't be part of this, and learn how to manage the fish market. That's part of the conflict resolution skill. Next is unaware of the background of the discussion topic. आपने टॉपिक तो सुन लिया, उसकी बैकग्राउंड नहीं पता. सो क्योंकि बैकग्राउंड नहीं पता, आप सतह पे घूमते रहते हो और आपके कम्युनिकेशन, आपके कंटेंट में डेप्थ नहीं होने के कारण आप ऊपर ऊपर घूमते रहते हो. एक ही बात को बार बार घुमाते रहते हो. ना बैकग्राउंड पता है, ना उसका कॉन्सिक्वेंस पता है कि इफ इंडिया टेक्स दिस ऑप्शन व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, इफ इंडिया जॉइंस नाटो प्लस इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होगा. सो जब तक ये पता नहीं चलेगा आप कभी भी एक डेप्थ में ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. खोखलापन रहेगा. सो अनअवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द करंट इवेंट्स, बी इट इजराइल हमास का लड़ाई हो, या मिडिल ईस्ट का इन्वॉल्वमेंट हो, या इंडिया का स्टैंड हो, whatever. Because of all these things and because of lack of confidence, highly anxious behavior, non-verbal communication से पता चल रहा है कि बंदा बहुत ही anxious है, कुर्सी के edge में बैठा हुआ है, he is not comfortable discussing, he is not able to maintain eye contact, बहुत anxious, stress levels are very high because बोलना पड़ रहा है अंग्रेजी में. ये सब visibly दिखता है GTO को. Poor non-verbal communication, body language बड़ा weak है, eye contact नहीं करना, क्या बोलते हैं, सिंक में नहीं होना, हवा में बोलना, not bothered whether somebody is listening to me or not. So these are all indication of poor non-verbal communication. Sitting on the edge of the chair, nervousness को indicate करता है. Next is avoiding eye contact. अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ आई कांटेक्ट नहीं करता, उनके नीचे देखता है, पैरों की तरफ देखता है या सर के ऊपर से देखता है. सो अवॉइडिंग आई कांटेक्ट शोज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. सो हाउ विल यू बी इफेक्टिव इफ यू कैन नॉट मेंटेन आई कांटेक्ट. स्पीकिंग फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, सिर्फ बोल रहे हो बीच बीच में, 2-3 मिनट में, 4 मिनट में एक बार हवा में कुछ भी बोल देते हो. नॉट रियली बॉदर्ड कि इसको कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा, बट एक सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मैं कुछ तो बोल रहा हूँ. बट देन वी आर लुकिंग फॉर इफेक्टिवनेस इन द group effectiveness. You will not be effective in speaking for the sake of speaking. Next is lack of assertive communication. Assertive communication will only come when you have confidence in what you're speaking and you're clear that you mean something. When you're making statements, when you're simply making noise, how can you be assertive? So assertive communication is a part of
डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल. एक वीडियो है AFOSOP का, उसको चेक करना. यू विल फाइंड what does effective communication skill means, and there are 7 C's of communication करके एक वीडियो है, उसको भी देखना. 7 C's of effective communication. Next is looking at the GTO, attention seeking. एक लाइन 2 लाइन बोलना और उसके बाद GTO की आंखों में आंख मिला के देखना कि सर ने मुझे देखा ही नहीं. This is attention seeking. You want to be in the limelight. You are doing it so that you project yourself at the cost of others. So attention seeking behavior is not a desirable behavior. Attitude of approval seeking from GTO. अपनी बात को रख के, क्योंकि आपके ऊपर आत्मविश्वास नहीं है तो आप GTO की तरफ देखते हो कि GTO सर ला रहा है या GTO एक्नॉलेज कर रहा है, so that you feel more confident. No, your confidence must flow from within you, not from outside you or from GTO. So no approval seeking behavior. Getting subdued when others speak assertively. ग्रुप में 1-2 बंदे जो assertive communication करते हो, जो बहुत effective है, उनके टोन, टेनर, मैनर एंड डेप्थ को देख के आप घबरा जाना और आप सबड्यू हो जाना. मतलब आप उनके सामने मेंटली एंड इंटेलेक्चुअली सरेंडर कर जाना. दिस इज इंटेलेक्चुअली एक वैक्यूम आ जाता है कि मेरा खोखलापन दिख रहा है इस बंदे के सामने. ही इज सिंपली एक्सप्रेसिंग हिज पॉइंट, अदर पर्सन, बट इज वेरी असर्टिव, इज गॉट डेप्थ, और उसका डेप्थ देख के आप घबरा जाते हो. सो दिस कैन ओनली बी इम्प्रूव्ड व्हेन यू ब्रिंग डेप्थ इन यू. Feeling of inferiority complex, when you feel others are better than you, others are more assertive, others' knowledge about the topic is better than me, others' language skills are better than me. There can be many other things that's happening. These all can lead to a feeling of inferiority complex where you yourself start undermining yourself, and this is seen through your non-verbal communication and the way you conduct yourself in the group discussion. This can be fixed with practice. Delay in language conversion, क्योंकि English communication skill के ऊपर काम नहीं किया, so we first think in our mother tongue, Hindi, English, हिंदी, मराठी, मलयालम में, और फिर उसको उस हिंदी को अंदर फिर ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेशन में वोकैबुलरी कम होने के कारण सोच और बोल के बीच में बहुत ज्यादा गैप आ जाता है. दिस इज बिकॉज ऑफ डिले इन लैंग्वेज कन्वर्जन. वी आर नॉट एबल टू थिंक इन इंग्लिश एंड स्पीक इन इंग्लिश. वी फर्स्ट थिंक इन आवर मदर टंग एंड देन कन्वर्ट इनटू इंग्लिश, and because of weak vocabulary there is a delay. This delay comes as a delay in your communication and it reduces your communication effectiveness drastically. I don't know कितनों को ये point समझ में आया. Point number 22 मुझे लिख के बताना. Next is unable to think real time. That's also called fixed thinking. You know, you're expected to listen to the other person's argument and then respond to that, but this will only happen when you're able to process other person's communication. But uske liye you have to do something called active listening. What is happening is आप active listening ना करके you're simply waiting कि अगला बंदा चुप हो जाए तो मैं अपना जो पहले से सोचा वो लाइन बोलूंगा, एंड तब तक वो कोई और बोल देता है. देन यू थिंक अब मैं क्या करूं, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन एज एंड व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड. दैट्स बिकॉज यू आर नॉट एबल टू थिंक रियल टाइम. सो रियल टाइम थिंकिंग के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग करना सीखना पड़ेगा. प्लीज मुझे बताना what have you understood by real time thinking and active listening. कमेंट करके बताना 23 पॉइंट पे. नेक्स्ट इज मर्मरिंग विद द एडजेसेंट कैंडिडेट. क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, आपको कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो बगल में कोई आपके जैसा कमजोर बंदा है तो आपस में 2 लोग बात करना शुरू कर देते मर करके, और जीटीओ को दिखता है कि ये दोनों आपस में कुछ मर्मर कर रहे हैं लेकिन सुनाई नहीं देता. एंड यू आर नॉट स्पीकिंग टू द ग्रुप, यू आर स्पीकिंग टू द एडजेसेंट पर्सन. नो, दैट्स अ पुअर कम्युनिकेशन स्किल एंड इट इंडिकेट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना. Murmuring with the adjacent candidates and low voice. Next is faulty thinking that if the group does well, I will also benefit. कि एक बिलीफ है कि अगर ग्रुप में अच्छा परफॉर्म किया तो मैं भी करूंगा. नो, there are 2 terms. It's called participation and contribution. ग्रुप अच्छा कर रहे हो और आप उसमें I agree with you बोलते रहोगे तो आपका योगदान नहीं होगा. अगर आपको भी बेनिफिट होना तो you have to contribute, है ना. It is your ability to function in a group. Your functional capacity, है ना, that is what we are checking, not the group's collective ability to function. हम देख रहे हैं कि उस collective activity में आपका क्या contribution है, and that will only happen when you work on yourself. So group बढ़िया करे does not necessarily mean कि आप भी बढ़िया कर रहे हो. Next is over decency of candidates. Some candidates are very good and they are too decent to be involved in a group activity, क्योंकि उनकी decency उनके बीच में आ जाता है. They are too decent to get into
interactive discussion. They wait for others to speak and finish. They will never get an opportunity because they're too decent. Potential है, but decency itself is coming in between. किसी को ऐसा feel हुआ है decency के कारण नहीं बोल पा रहे? चेक करना, क्या समझ में बताना. Because others are over dominating, others are assertive, you're mild, you're decent, but your decency itself is becoming a hindrance to your performance. 26 point को explain करके मुझे बताना क्या समझ में आया. Tendency to please others. Just because I want to be good to everybody, I'm not able to express what I really feel. तो मैं सबके साथ हाँ में हाँ मिलाने की tendency. So मैं दिन को भी हाँ बोलता हूँ, रात को भी हाँ बोलता हूँ. उसके in the process I lose my own identity. So tendency to please other. No, this is not leadership. This is follower की character की आप हाँ में हाँ मिलाए जा रहे हो. Next is thinking that others will get opportunity to speak. No, it is a leaderless group task. You have to seek your opportunity. Nobody will give you the opportunity. So others will speak, others will shout, others will do everything. You'll have to find a way out. So this is a skill that you have to develop, interpersonal skills. Nobody will give you an opportunity. You have to be there and seek opportunity and perform. Last is faulty coaching. कोचिंग में इन चीजों को ठीक करने के बजाय आपको रेडीमेड चीजें सिखा दिया जाता है. आपको फर्स्ट बोलना बोल दिया जाता है. आपको जीटीओ ने जो जीडी का टॉपिक दिया उसी को रिपीट करने के लिए बोल दिया जाता है और आपको लगता है ये सब बोलने से आपका काम बन जाएगा. आपको आई एग्री विथ यू बोलना देखता है. आपको लेफ्ट एंड राइट देखना सिखाते हैं. ये सब चीजें जो आर्टिफिशियली आप मैनिपुलेट कर रहे हो, दिस इज फॉल्टी कोचिंग. आप अपने कंटेंट पे, अपने व्यक्तित्व के, अपने एबिलिटी टू कम्युनिकेट पे, आपके अंडरस्टैंडिंग पे, आपके चीज़ों को समझने के एनालिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, किसी भी चीज़ को कैसे समझना है, ये ना आप डेवलप करके ये टिप्स एंड ट्रिक्स में उलझा देते कोचिंग वाले, विच इज इनकरेक्ट. एंड फाइनली पोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. ये सब कमियों के बाद भी एक भ्रम होना कि मेरा तो हो ही जाएगा. एक मेरी इच्छा है ऑफिसर बनने की और मुझे लगता है मैं बन जाऊंगा. क्यों लगता है वो मुझे पता नहीं. सो इन एब्सेंस ऑफ प्रिपरेशन you wanting to achieve the success is the biggest illusion. And I think we as coaching wale sir, it's our responsibility to show you the delta and help you bridge the delta rather than help you hide the delta. Manipulation nahi, develop karna hai, which is possible. So please understand cause effect relationship. What you prepare today will become the cause, and what you perform tomorrow will become the effect. And when the effect is desirable, the outcome will also be desirable. But when the cause itself, when the preparation itself is undesirable, how can favorable performance come? And when the favorable performance does not come, how will a favorable outcome come? This is all connected. So एक video है law of karma, the cause and effect relationship. It is part of the SML video. उसका भी link मैंने description box में दिया है. Kindly watch it and you will understand what I'm saying. So इसके अलावा बहुत सारे points है जो कि आप comment box में लिख सकते हैं. We'll take as and when it is shared with me. And जरूर कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया इन वीडियो से. Your comments will encourage me to put more videos of this kind. इसके अलावा 2 weeks का AFOSOP offline composite batch is held every month at Nagpur. The institute addresses AFOSOP Sahas the camp at Nagpur. It is a fully residential batch where the candidates and the assessors both will be staying at the Sahas the camp Nagpur mein. So the interaction will be much more longer than the traditional 9 to 5 wala jo format hai. And in order to register, you can call me at 9090099035. Call me or WhatsApp me and I'll share you the details. Kindly share this information with your friends and do comment on this video. Thank you and may God bless you. Thank you very much.